Hello, everyone, and a very good afternoon to a very important session. I think on one of the very important law subjects, law examinations, in particular, that is the All India Law Entrance Test, which is conducted by National Law University, Delhi, right? And NLU Delhi has, of course, consistently been one of those law schools, one of the very rare law schools which has actually stayed out of the CLAT combination, right? It's not part of the CLAT consortium and it conducts its own separate examination, right? Now, this year, as some of you must have seen in the, not necessarily in the newspapers, but in the various notifications and so on, कि इस बार एलेट का जो एग्जाम है, एलेट के एग्जाम में पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो गया है, राइट? देयर इज अ बिग चेंज इन द पैटर्न एज फार एज द एलेट एग्जाम इज कंसर्न. 5 सेक्शंस की जगह इस बार पहली बार एलेट एग्जाम में क्या होगा कि सिर्फ 3 सेक्शन आएंगे, राइट? विच ऑब्वियसली ब्रिंग्स अप some very basic questions. Is it really a new pattern, or is it simply a question of old wine in the new bottle? And old wine in a new bottle मैं क्यों कह रहा हूँ, because although it seems like the fact that they are going to do a complete revamp और इस तरह से कुछ ना कुछ कह तो रहे ही हैं, but to be honest मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो घूम फिर के द प्रिपरेशन दैट यू हैव टू डू, राइट, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड, द काइंड ऑफ सेक्शंस जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे, राइट, वो सब घूम फिर के सेम ही लग रहे हैं, राइट? इट्स नॉट रियली, of course they're calling it by different names and something else is happening and something else is happening, but at the end of the day, right, at the end of the day it doesn't seem like it's going to be a very different preparation plan. At least अगर हम preparation के perspective से देखें, although there has been some changes in terms of the kind of questions etc that you're going to get, right, और pattern में भी change हुआ है कह रहे हैं, but it's basically looks like it is going to be the same exact thing, right? Same exact thing type का लग रहा है. सबके इक्वल टाइप के मार्क्स भी होंगे, इंग्लिश में 50 मार्क्स होंगे, जीके में इस बार 30 मार्क्स होंगे, एंड लॉजिकल रीजनिंग देयर सेइंग विल बी अबाउट 70 मार्क्स. सो इज इट रियली, व्हाट्स द चेंज, व्हाट इज नॉट द चेंज, यही हमें आज का डिस्कशन का विषय बना रहे हैं. Do you have to do some separate kind of preparations and so on? Hello Asmit, hello Manu. Do we still have to prepare for maths? Yes guys, you still have to prepare for mathematics. वो quantitative aptitude का section they're saying does not exist, but logical reasoning जो वो कह रहे हैं, राइट, लॉजिकल रीजनिंग जो 70 मार्क्स का आएगा, it will include all kinds of reasoning, right? And that's what we are going to discuss. Do stay tuned in. Just give me a couple of minutes, just have some important announcements to make. Uske baad immediately I will come to the thing that you guys are sincerely waiting for, right? My name is Debajyoti Das. I'm an alumni of Hidayatullah National University, and I've also secured an all India rank 20 in the NLS Bangalore exam in 2006. I've also been a Microsoft Intellectual Property Research Scholar, and I've been a capital market lawyer at Amarchand Mangaldas, which is one of the topmost law firms in India. You can join me on Telegram. This is the name of the group. This is the link to the group, guys. Those of you who have not joined me, please do feel free to join in. There are various unique features of the Unacademy Plus platform as well as the special classes platform. And now, right, for the first time, we also are introducing the CLAT Iconic program, which is a flagship program for all the CLAT aspirants. You can continue to use the code DEB10 to get your additional 10% discounts, right? वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे प्लस के लिए हो जिसकी फीस आपको यहाँ दिख रही है, या आइकॉनिक के लिए हो where you can see the various subscription options here. Now, what's the difference between the plus and the iconic features?
फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप ऑप्शन जो आपको सिर्फ आइकॉनिक में ही दिया जाएगा. लाइव डाउट सॉल्विंग होंगी, रेज अ हैंड में आपको प्रायोरिटी मिलेगी. और ये जो वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप होगा, यू विल गेट 6 सेशंस पर मंथ, right, of 10 minutes each, one on one with a special mentor. We have 2 excellent mentors who are going to be joining us for these sessions. That is Anmol Gupta, who's all India rank 3 in NLS Bangalore, and Anshul Vats, who's also all India rank 24 and is in NLS Bangalore as well. Again, like I said, प्लस और आइकॉनिक दोनों के बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में मिलेंगे. प्लस में बस आपको आइकॉनिक के स्पेशल बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलेंगे. टुमारो ऑफ कोर्स इज रिपब्लिक डे गाइज, सो वी हैव इन ऑनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन डे तो अलग से हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते ही हैं, बट ऑल्सो ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे we have some constitutional law classes by our top educators as well as quizzes, and you can have some prizes that you can also win as well, right? We are also starting off with the master law batch, which is the all state law entrance examination prep batch of 2022. ये होगा आपका one day after Republic Day, that is on the 27th of January, and on the 28th of January also we have the Excel law batch, which is starting off for the batch of 2023. The ULAT examination, which happens every alternate Saturdays, as well as the weekly T20 tests are going to continue to happen for all of you, and the live quiz feature also continues to be active for all of you. Okay, new pattern of the CLAT examination. As per the latest AILET 2022 exam pattern, the AILET question paper will include 150 multiple choice questions. So there is no change theoretically. This is the same as earlier. Okay, this is the same as earlier. Okay, the AILET 2022 pattern, however, has been changed, and the candidates must note the latest paper pattern. तो ये latest pattern क्या है? Basically we are now, अगर हम देखें, this is the new thing, right? This is the new. अगर मैं old अलग से आप लोगों को बताना चाहूं, right? अगर मैं old आप लोगों को अलग से बताना चाहूं, what was the earlier pattern, right? What was the earlier pattern? Earlier pattern में English कितना था? 35 marks था, right? GK and current affairs was again around 35 marks. Okay, logical reasoning जिसको हम कहते थे, this was basically only around 10 marks. Okay, so there is a big difference in the old and new pattern. क्यों? Because old pattern में we had couple of extra sections. For example, हम लोग का legal section अलग से आता था in the old pattern, which was about 35 questions again approximately, right? And maths भी आता था, okay, which was also around 35 questions, right? So this was a total of, again, वही 150 होते थे पहले भी, वही 150 हैं अभी भी. So the number of questions has not really changed. The number of questions पहले भी 140 थे, 150 थे, and now also it is 150. But कंफ्यूजन वहीं से शुरू होता है जहां से क्लैरिटी शुरू होती है ना. दैट इज द ब्यूटी ऑफ सम ऑफ दीज नोटिफिकेशंस. सी, व्हेन वी से इंग्लिश इज नाउ 50 मार्क्स, जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, राइट, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, दिस विल नाउ कंप्लीटली बी इंक्लूडेड इन द इंग्लिश सेक्शन, राइट? तो ग्रामर तो आएगा ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा ही, राइट? ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर ऑब्वियसली इंक्लूडेड. fill in the blanks, antonyms, synonyms, ये वो, all of these things obviously are part of the AILET pattern, right? उसको छोड़ के आई एक्सपेक्ट कि कई सारे CR के क्वेश्चंस भी अब इंग्लिश में आ सकते हैं. जीके एंड करंट अफेयर्स का थोड़ा सा वेटेज इनफैक्ट कम हुआ है, राइट? वी गॉन फ्रॉम 35 मार्क्स टू अबाउट 30 मार्क्स. And this pattern change again is basically pretty consistent. अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग का 70 मार्क्स है, which was earlier a very small weightage, कभी 15 आता था, कभी मैथ्स में 20-25 आ जाता था, चेंज होता रहता है.
But logical reasoning basically it will include, right? Here it will include legal and analytical. Okay. So legal and analytical both आएगा. Both sections are covered in this overall 70 marks. Right? So अब analytical reasoning is basically what? It's basically mathematics, right? And legal तो self explanatory है ही. Legal is obviously legal. So we will have principle fact based questions. Again, this is not something that I'm guessing. ये मेरा guessing का issue नहीं है. जो कहा जा रहा है कि भाई स्पेसिफिकली हो चुका है कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स जो होंगे वो होंगे लीगल प्रेपोजिशंस एज वेल एज लीगल रीजनिंग. सो अल्टीमेटली वी आर बैक टू स्क्वायर वन कि वही प्रिंसिपल होगा, फैक्ट्स होंगे और उस टाइप का. सो if you think about it, it's like I said, that's why I think unless there are some major surprises that we are expecting, right? जो मैं तो expect नहीं कर रहा हूँ, but unless there is a major surprise that happens in the actual examination, basically हमारे जो 5 सेक्शन पहले आते थे, इंग्लिश, लीगल, मैथ्स, लॉजिक एंड जीके, वही 5 सेक्शन, इट इज द सेम 5 सेक्शंस जिसमें से अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चंस वहीं से ही आएंगे, राइट? जस्ट दैट सेक्शंस का क्लासिफिकेशन, राइट, सेक्शंस का क्लासिफिकेशन जो है दैट हैज बेसिकली बीन that has basically been modified to some extent. So ultimately let's see कि कैसे होता है, क्या होता है. बाकी आप लोग सबको डेट्स, एग्जाम का डेट तो पता ही है. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, राइट, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस क्या है? द नोटिफिकेशन तो अभी 17 जनवरी को आया है, एंड ऑन द सेम डेट इटसेल्फ जो हमारा एप्लीकेशन भरने का है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, राइट? सो जितनी जल्दी हो सके गाइस, आप सब अपना एप्लीकेशन बिल्कुल भर दीजिए. ऑफ कोर्स द डेडलाइन इज देयर इज स्टिल सम टाइम, राइट? 7th अप्रैल तक टाइम है, बट मतलब कोई पॉइंट नहीं है ना. यू माइट एज वेल गेट इट ओवर विथ एज एज क्विकली एज पॉसिबल, राइट? द एग्जाम डेट इटसेल्फ इज द 1st of May, राइट? May 1st को एग्जामिनेशन होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 17 अप्रैल को ऑफ कोर्स आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह ये सब जो आना है वो सब कुछ अल्टीमेटली 17 अप्रैल को आना है. Manu Jalaj has a question. What's Manu's question is, sir, will this affect the cutoff in any ways? I don't think so. Because again, like I said, unless it's a major surprise, see, अगर कुछ ज़्यादा ही surprise type का होगा, then I think there will be a drop in the cutoff, right? Because essentially people are unable to practice too much as far as the past year papers are concerned, क्योंकि pattern अलग हो गया. But अगर वो वही ओल्ड वाइन न्यू बॉटल वाला मामला है, अगर राइट, कि वही 5 सेक्शन से पूछना है, बस नाम अलग कर दिए हैं, एंड देन यू स्टिल हैव टू आंसर 150 क्वेश्चंस ओनली, एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो गोइंग टू बी द सेम, right? Then I think there should not be a major change. I don't think there should be a major change to the cutoff. But ultimately तो देखो भाई, अगर सच में कुछ बहुत ही अलग हो गया तो कट ऑफ गिरेगा ना. डोंट वरी, सी इफ देयर इज अ मेजर सरप्राइज आल्सो, नन ऑफ यू नीड टू पैनिक का यहाँ पर कोई नीड नहीं है, बिकॉज इफ देयर इज अ मेजर चेंज और अ मेजर सरप्राइज, इट इज गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीबडी. ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब सिर्फ आपके लिए कुछ अलग नया हो रहा है. तो होगा भी तो दैट्स ओके. बस पढ़ाई, क्योंकि वही 5 एरिया से घूम फिर के आना है, the preparation is not actually changed very much. You still have to read English, you still have to read GK, you still have to practice a little bit of mathematics, and you still have to do legal reasoning, critical reasoning, analytical reasoning. It's pretty much the same thing, right? It's just they're calling it slightly different things, that's all. Akash, sir, one-liner questions or passage? No, I don't expect the AILET to go the CLAT route. CLAT में तो आपका पूरा passage ही आ रहा है, right? बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि एलेट में पूरा क्लैट की तरह हो जाएगा. आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू आस्क यू स्मॉलर क्वेश्चंस. आई मीन इन द स्मॉलर इन द सेंस
Not that the CLAT is lengthier, that's not my point. My point is simply that जैसे एलेट में आता था कि भाई क्लैट में तो बड़ा पैसेज आता है, फिर 4-5 क्वेश्चंस आते हैं. I think AILET is going to keep giving you smaller questions and then one question, smaller question, one question, smaller question, one question, compared to the CLAT, जिसमें one big passage and then 5-6 questions, right? So in terms of practice, अगर हम प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से देखें, आई थिंक इट इज स्टिल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एलेट अ लिटिल डिफरेंटली and you have to practice the CLAT exam a little differently, but not preparation. See, please understand there's a difference between practice and preparation. I am still saying CLAT ho ya AILET ho, right? Both for CLAT as well as AILET, the preparation continues to be the same, राइट. प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. द ओनली डिफरेंस, द ओनली रियल डिफरेंस, राइट, इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ योर प्रैक्टिस. बिकॉज क्लैट का the way they ask you the questions is a little different, and AILET का the way they ask you questions is a little different. एक का पैसेज में आता है, एक का कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वेश्चंस होते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, एंड सो ऑन. So this becomes a little bit of a difference in approach. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, राइट. हर क्वेश्चन के बाद पूरा ब्रेक लेके you have to go into a completely different principle when it comes to AILET. Whereas CLAT में वो कम से कम 5-6 क्वेश्चन तक तो आप एक ही चीज कर रहे हैं ना. तो आई डोंट नो विच वन इज इजियर, और ये सब मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज कंपटीशन तो कंपटीशन ही है, राइट. बट दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अलग से डेफिनेटली कर लीजिएगा. सिर्फ क्लैट के प्रैक्टिस से एलेट नहीं होगा, सिर्फ एलेट के प्रैक्टिस से क्लैट नहीं होगा. तो दोनों के लिए अलग अलग प्रैक्टिस डेफिनेटली होना चाहिए, राइट. आई होप दैट्स हेल्पफुल, आकाश. And I think that's what's going to happen in the actual examination. Right. Okay, so that is one of the very important things that I wanted to discuss with you guys. We do have the important cases session that I was doing yesterday. Uska part 2 couldn't happen late evening yesterday, so we'll do that today evening at 10 p.m. guys. Those of you who want to join in today evening at 10 p.m, we will be discussing the important cases of January 2002. Current affairs continues to be an important part of your preparation, not just in AILET but also in the CLAT. So do stay tuned in, and today evening at 10 p.m. I will see you guys. So just a quick session that I wanted to do with you guys, right? So have a lovely day, everyone. I will see you guys in the evening. Thank you very much. Have a wonderful day ahead, guys. Bye bye.